Right, our top focus. The Home Ministry has ordered a high-level probe into the massive Parliament security breach. A multi-agency probe team has been set up under the DG CRPF. For more on this, I'm joined by my colleague Sunil Prabhu. Sunil, so it is a multi-agency investigation team which is going to look into this and recommend further action as well as focus on the lapses. That's right. This is on the specific request from the Lok Sabha Secretariat. The Union Home Ministry has asked the Director General of Police for the CRPF, Mr. Anish Dayal Singh, to immediately start the inquiry, to go into the reasons for the breach in security, identify the lapses, and recommend further action. It will be a multi-agency probe, and it has been asked to submit its report at the earliest. So really, they want to get to the bottom of it. As you're well aware, members cutting across party lines today at the all-party meeting convened by the Speaker raised a number of concerns that have been exercising their minds, and after that a number of steps have been taken in terms of security apparatus and what needs to be done in the next few days. And definitely it's in this backdrop that some of the suggestions which will come from the committee will have to be implemented at the earliest. Right. Sunil, thank you so much for joining us with that update. Meanwhile, as per sources, opposition MPs are likely to seek discussion on Parliament's security breach on Thursday. Sources indicate that opposition MPs, part of the India bloc, will demand discussion to be held in front of Home Minister Amit Shah in both houses of Parliament. For more on this, I'm joined by my colleague Arvind. Arvind, so the opposition clearly today, of course, it was all about what exactly happened, piecing that together. But tomorrow, the opposition MPs are going to up the ante in a way and seek answers from the government. Yeah, Tanima, according to our sources, opposition parties, part of India bloc, have decided to up the ante. And tomorrow morning at around 10 a.m., all these parties will be having a meeting at the office of a leader of opposition and also Congress President Mallikarjun Kharge in Parliament at around 10 a.m. After which, once the proceedings begin, what we are learning from our sources is that in both the houses, the opposition parties will be demanding a discussion on this particular issue. So they won't be allowing Parliament to proceed on with the usual business. Instead, they would be demanding a discussion on this very issue in both the houses, on the floor of both the houses. And they also seek the presence of Union Home Minister also during the discussion. They want the Union Home Minister to speak on this particular issue on the floor of the house, house in both the houses. So that seems to be the plan of opposition parties. Coming from what we are learning from our sources in the Delhi police security establishment is that though they have got the identities of all the people involved in this particular case, at least 2 more people are currently on the run. Their police is trying to nab them too. But the motive behind this particular attack seems to be something that the Delhi police is still worrying. So once all the information are gathered, they would be passing on to the Union Home Ministry. And if at all, if things go as per the plan of opposition parties, we can expect Union Home Minister to make a statement on the floor of the House in both the houses. Right. There are still a lot of unanswered questions left, and opposition will be demanding that in Parliament on Thursday. Arvind, thank you so much for joining us with that. Remember, the attack comes on the 22nd anniversary of the 2001 Parliament attack. Today, there were dramatic scenes inside Parliament. Take a look at this report, which captures what exactly happened through the day. A shocking security breach in Parliament on the anniversary of the 2001 Parliament terror attack. 2 incidents involving 4 persons, both inside and outside the highly secured Parliament complex. At 1:02 p.m., Khagan Murmu, first-time BJP MP from Malda North in Bengal, was addressing the House during the 0 hour. 2 men, both carrying smoke canisters, emitting yellow smoke, jumped from the visitors' gallery and ran into the Lok Sabha chamber. The House CCTV system showed 1 man wearing a dark blue shirt leaping across desks to evade capture, while the second was in the visitors' gallery spraying smoke. Congress MP Rahul Gandhi
and Union Ministers Hardeep Singh Puri and Anupriya Patel were present at the time. Both men were overpowered by MPs and security staff. Plumes of yellow smoke could be seen all over the Lok Sabha. The two men involved in the daring attack were identified as Manoranjan and Sagar Sharma, who got their visitor's pass in the name of MP Pratap Simha. Suddenly, two people from the visitors galley jumped into the house. यहाँ पे आते हैं विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा अफरा तफरी मच गई लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है BJP member Rajendra Agarwal, who was in the chair, adjourned the proceedings till 2 p.m. as soon as the disruption happened. Even as the security was trying to grapple with this breach, details emerged of another breach just about 10 minutes ago around 12:50 p.m. Two other individuals, a man and a woman, were detained outside Parliament, also with coloured smoke canisters that exploded and spewed red and yellow smoke. The man and woman have been identified as 25-year-old Amol Shinde and 42-year-old Neelam. Delhi police sources tell NDTV that the two incidents are likely related. मैं इस वक्त सीन ऑफ क्राइम के ठीक सामने हूँ संसद भवन के सामने और ये जगह आप देख सकते हैं ये लाल रंग की जो केमिकल है इसको सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए आए हैं और इस सैंपल को यहाँ से लिया जा रहा है। ये घटना 12:30 बजे हुई लेकिन काफ़ी देर से यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आए हैं उन्होंने यहाँ पे सैंपल्स लिए हैं इन केमिकल्स की। At 2 p.m. when the House resumed, the Lok Sabha Speaker shared details on the investigation. प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। A massive security breach on the 22nd anniversary of the terror attack on Parliament brought back dark memories of 2001. In fact, hours earlier, Prime Minister Narendra Modi and President Draupadi Murmu led a tribute to the 9 security personnel who were killed. With bureau inputs, in New Delhi, this is Maria Shakil. So who were those people involved in the attack? The police say that there are 6 people. At the moment, 5 of them have in fact been detained. And here's what we know about all of them. Six people, 4 of them raising slogans and armed with smoke canisters, cause a massive security breach in Parliament. But who are the 6 accused? The 2 intruders inside Lok Sabha have been identified as Sagar Sharma and D. Manoranjan. 27-year-old Sagar Sharma, an e-rickshaw driver from Lucknow, is the one who was seen leaping from bench to bench in the house and was also thrashed by MPs inside. A visitor's pass in the name of BJP MP Pratap Sinha was seized from him. इसके लिए तो हम खुद ही हमको घबराहट इतनी हो रही है। यहाँ से कितने दिन पहले गया था? अभी 2 दिन तो हुआ है उसको हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या बोलकर गया था? बोलकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो अभी कुछ काम है उनके साथ तो इसीलिए जा रहा हूँ। His accomplice D. Manoranjan is a 35-year-old resident of Mysuru. The computer science graduate was also seen brandishing and opening a smoke canister inside Parliament. ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೇ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ. But it was not just security breach in the house but protest outside as well. 25-year-old Amol Shinde, a resident of Maharashtra, and 42-year-old Neelam Singh from Hisar were also detained outside Parliament. They were found raising slogans and holding the same yellow canisters. Police say they are connected to intruders inside.
Neelam's family members are shocked, claiming she has no political connections and was preparing for a job as a teacher. हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन नहीं था बस। अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया इसका तो हमें पता भी नहीं है। देख, उससे बात करके उसके बैठ के उसे तभी पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया। Police have also named one individual, Lalit Jha, who was allegedly sheltering the others in Gurugram. A sixth suspect, Vicky, has been detained from Gurugram. अभी हमारे संज्ञान में आया है। दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको भी डिटेन करा गया है, लेके गए हैं पूछताछ के लिए। और क्योंकि ये मैटर सारा दिल्ली से संबंधित है और वहीं की जांच एजेंसियां जो वहाँ की पुलिस है वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि इस घर में आके उनके पास रुका है, ऑलरेडी डिटेन करा जा चुका है उनको, जो हमारे पास अभी तक सूचना प्राप्त हुई है। Preliminary probe suggests the smoke from the canister was non-hazardous, but the exact conspiracy and what binds the 6 individuals together is still behind a smoke screen. With Mukesh Sagar, Bureau Report, NDTV. Now, the security breach at Parliament has led to immediate upgrade in security apparatus. Sunil Prabhu has all the details. This Parliament is a multi-layered security, from the SPG to the CISF to the CRPF to NDRF to various agencies, Delhi Police, and thousands of crores of rupees have been spent of taxpayers' money to protect the temple of democracy. How did you allow it? Now, some of the measures that I have taken, that in the visit, they will not be permitting visitors immediately, and in the visitors gallery, there will be a provision for what they call now, just like in airports, a glass seal so that nobody can jump over. There will be more watch and ward staff, something that they learned today, that there was inefficient, not sufficient watch and ward staff to protect the members of parliament in case of an untoward incident. So there will be more deployment of watch and ward staff in the chambers of the house. The third, of course, is one would have expected that there would be more body scanners in the 21st century new parliament, but those body scanners are not there. So full body scanners will be provided, and more importantly, separate entries for various, be it MPs, for it journalists, for visitors, to ensure safety and security measures that will be taken. Right, that will slip into a short break at this point. More news and updates on the other side. Welcome back, and we keep our focus on the massive security breach in Parliament. My colleague Maria Shakil earlier spoke to BJP MPs Khagen Murmu and Rajendra Agarwal, who were in the thick of things when the breach took place. Listen in. कागन जी, जब आप सवाल कर रहे थे तब ये घटना घटी। आपके चौंकते हुए वीडियो आ गया है सामने में, और आपने क्या आवाज सुना था तो आप ये चौंक गए थे और फिर आपने पलट करके देखा था? हाँ, एक्चुअली मैं उसी टाइम में मेरा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय था। वो जो ये एक्चुअली मैं 4 साल हो गया, 4 साल तक मैं एक ही जो विषय महत्वपूर्ण विषय वो है एयरपोर्ट का विषय, एक उड़ान के बारे में। वहाँ पे हवाई अड्डे अभी तक मालदा में है नहीं। मालदा ऐसा एक शहर है पश्चिम बंगाल में, आप देखेंगे तो जितना ही बड़ा शहर है उनमें से एक मालदा जिले हैं, जिले शहर हैं। उसी शहर से एक बागडोगरा में एक हवाई अड्डे हैं, वो उसका दूर 250 किलोमीटर है, और दूसरा है कोलकाता में जिसका दूर है 350 किलोमीटर। इतना 250 और 350 किलोमीटर दूरी में 2 एयरपोर्ट है। इसलिए हमारे मालदा में रहने वाला लोगों का और ये सटा हुआ जो स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, और मालदा उत्तर दक्षिण दिनाजपुर मुर्शिदाबाद, ये भी जिला हैं, जो सभी जिले के लोगों को लिए एयरपोर्ट बहुत ही वहाँ का जरूरी था। इसीलिए मैं इतना महत्वपूर्ण एक विषय पर बोलने शुरू किए। जस्ट मैंने बोल रहा था, मैं बार सदन पे बोले, मैंने मंत्री जी से पत्र लिख के मैंने दिए, मैं खुद जाके मिले। मैं इसीलिए हमारे माननीय
स्पीकर साहब का मैं दृष्टि आकर्षण कर रहा था। उनका ओर से मैंने कहना चाह रहा था मेरा वहां पे एक हवाई अड्डे बने। तो ये बोलते शुरू किया मैंने, जस्ट शुरुआत का मान लीजिए 50 सेकेंड तक मैंने बोला। उसके बाद मैंने दाहिना तरफ से एक आवाज उठ रही थी, तो एक लग रहा था क्या वो जो दाहिना तरफ जो ये विजिटर्स गैलरी है, गैलरी में कुछ हो रहा है। तो उसके बाद फिर ऐसे भी एक आवाज हुआ, दुम करके एक आवाज। उसके बाद मैंने देखा सामने से कोई सांसद लोग दौड़ के आ रहा था, पकड़ो पकड़ो ऐसे बोल के। अग्रवाल जी, क्या घटना हुई? आप उस वक्त चेयर पर थे, क्या देखा आपने? नहीं, देखिए, जैसा आपने अभी उल्लेख भी किया, 0 आवर चल रहा था और 0 आवर में माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से संबंधित विषयों को उठाते हैं साधारणतया। तो तभी ये सामने कुछ हलचल हुई, शायद एक लड़का वहाँ पर कूद गया था। तो मैंने तो ये समझा कि वो शायद गिर गया है, परंतु तभी एक दूसरा जो लड़का था वो रेलिंग को लटक करके नीचे कूदा। तो ध्यान में आया, तो मैंने सबसे पहला तो मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि मैंने हाउस को एडजर्न किया और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को वहाँ जाने के लिए बोला। तेजी से दौड़े सभी जो हमारे माननीय सांसद थे, उन्होंने भी उन दोनों लड़कों को काबू में कर लिया। इसमें कोई बहुत देर नहीं लगी। लेकिन इसी दौरान एक उसमें नौजवान जो था, उसने जूता खोल रहा था। वो मैं समझा कि शायद वो जूता खोल करके फेंकना चाहता है, पर उसमें से उसने वो केमिकल संभवतः निकाला जिसकी गैस से पूरे चैम्बर को उन्होंने भर दिया। तो ये घटना हुई। इन द मीन टाइम जो सांसदों ने और सुरक्षा कर्मियों ने उन दोनों लड़कों पर नियंत्रण पा लिया था और उसको सुरक्षाकर्मी लेकर के दोनों को बाहर चले गए थे। लेकिन आपने कहा कि शायद वो लड़का गिर गया था, लेकिन वो कूदा था और जो 2 लड़के जो कूदे थे, जिनका नाम अभी हमें पता चल गया है, राजेंद्र जी, मुझे बताइए कि वो उसके एक व्यक्ति ने अपने जूते से निकाला सामान या दूसरे ने भी निकाला था जो कैनिस्टर था? नहीं, इतना तो मैंने तो एक को ही देखा उस प्रकार से, क्योंकि ऐसा है कि सांसद सदन के अंदर थे तो प्रत्येक की गतिविधि मुझे चेयर से नहीं दिखाई दे रही थी। मैं खड़ा हो गया था हालांकि, और हमारे स्पीकर साहब भी जो पीछे चैम्बर में ही थे वो भी आ गए थे। तो लेकिन ये जो सारा घटनाक्रम है, इसके अंदर धुआं फेंकने के बाद जो मैंने कहा ना कि हलचल हुई, तो मुझे ऐसा लगा शायद कोई गिर गया है। परंतु जब वो दूसरा कूद रहा था तो मुझे निश्चित हुआ कि ये भी कूदा ही होगा। मैंने पहले वाले को कूदते हुए नहीं देखा था, क्योंकि मेरा ध्यान लॉबी की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान तो हाउस की तरफ था। तो ये जो घटनाक्रम है इस प्रकार से हुआ था। ये Moving on to other news, and over 800 stranded tourists, including the elderly, women and children, have been rescued by the army in East Sikkim. The tourists were stranded in higher altitude areas of East Sikkim amid heavy snow. The rescue mission is still on. Soldiers have in fact vacated their barracks to shelter the stranded tourists.